Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for skills at the rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is Jyoti, and we have learned about LLP, its compliances, and many other. So now, what are we waiting for? Let's go. Yes. So first, I will start. I have a question that if you start a business today, would you prefer full control with full risk or limited risk with heavy compliances? Full control with full risk or limited risk with heavy compliances? As you all aware that sole proprietorship gives freedom but unlimited liability. Partnership gives us flexibility, but partners are liable for each other. And company gives us protection, but compliances costs are very high. So, is there any structure that gives both freedom and protection? The answer is LLP. LLP is not just a legal concept, it is a practical business solution. And in today's scenario, LLP is widely used by professionals like us, that chartered accountants, company secretaries, lawyers, and generally startups and SMEs are also involved with this LLP concept. So many traditional partnership firms are also nowadays converting into LLPs to protect themselves from this risk while keeping operational freedoms. So here there are different forms of business organization, that is companies, sole proprietorship, partnership, LLPs, and as I asked the question which forms will you choose, तो इसमें से तो कोई भी नहीं, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एज आई डिस्कस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लायबिलिटीज ज्यादा रहती है. पार्टनरशिप में भी ऑल पार्टनर्स आर लायबल, कंपनीज में कॉस्ट कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं. तो इन दैट सिनेरियो LLP जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस. LLP अंडरस्टैंडिंग से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि एज यू नो ना कि लॉ जो चेंज होता है वो किसी रीजन के बिना चेंज नहीं होता है. Every new business structures came because the earlier had some limitations. So as you know, the sole proprietorship, initially the business was started as a sole proprietorship, and here only one person owns and control the businesses. डिसीजन मेकिंग वेरी फास्ट होती है, कंप्लायंसेस काफी लो रहते हैं, बिजनेस इजीली स्टार्ट हो जाता है. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो इफ द बिजनेस incur losses, the owner's personal assets like houses or his savings can be attached with this. So in proprietorship, it gives maximum freedom, but along with this, there is maximum risk also. That's why proprietorship is suitable only for very small businesses. Okay. The second one is a partnership firm. As in partnership firm, there are partners to share the responsibilities and to overcome these responsibilities. In case of sole proprietorship, as there is unlimited liability, so overcome this risk. There are partners, more than one. Partners come together and form a partnership firm. So in partnership firm, capital risk and works they will share. Agreement decides this profit sharing ratios. This brought flexibility and share the responsibilities, but partnership still has some problems, that is liability is still unlimited, and each partner is liable for each other partner. मीन्स गलती किसी ने की और भुगतान किसी और को भी करना पड़ेगा. So if one partner commits a mistake or fraud, all partners suffer, even if they were not involved in the case. So this was the major concern, especially for the professional firms like CAs and CAS lawyers, etc.
सो इसकी भी लिमिटेशन हमने देखी. देन कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक. टू सॉल्व द लायबिलिटी प्रॉब्लम, द कंपनी स्ट्रक्चर वॉज इंट्रोड्यूस. लायबिलिटी लिमिटेड हो गई टू द शेयर्स हेल्ड. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी. पर्सनल असेट्स प्रोटेक्ट हो गई in case of companies, but companies brought their own challenges. As you know, heavy compliances, board meetings करनी है, AGM अटेंड करनी है, complex legal structure है, cost of formation even बहुत high हो जाता है in case of companies. So companies gives protection but flexibility बहुत कम देखने को मिलती है. ये सभी जो प्रॉब्लम्स और जो सिनेरियोज हमने देखा उसको ओवरकम करने के लिए और बैलेंस करने के लिए कि द फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन को बैलेंस किया जाए, द कॉन्सेप्ट ऑफ LLP वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008. LLP, it combines flexibility of partnership or and limited liability of company. So in LLP, partners manage business directly. Liability is limited to the contribution. Compliances is lower than company or separate legal entity exists. This is why LLP is often called as a hybrid business structure. And it is suitable for professional and knowledge-based businesses. LLP इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है कि प्रोफेशनल्स इवन वांटेड के ईच अदर्स जो मिस्टेक्स हैं कि दूसरे पार्टनर ने कोई मिस्टेक करी तो उसका भुगतान पहले पार्टनर को ना करना पड़े. दैट्स वाई कि प्रोफेशनल्स वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम ईच अदर्स मिस्टेक्स. एंड एसएमईज, ये दो केस में सबसे ज्यादा पॉपुलर LLP कॉन्सेप्ट होता जा रहा है. एसएमई ऑल्सो वांटेड lower compliances than company. So cost, in case of companies cost very high होती है तो SMEs also prefer कि LLP structure किया जाए. And government also wanted कि small businesses easily formalize हो सके. So in today's scenario, LLP as a modern और practical business structure के तौर पे देखने को मिलता है. सोल प्रोप्राइटरशिप ने फ्रीडम दिया, पार्टनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी ने प्रोटेक्शन दिया. तो उस वजह से LLP ने फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोफेशन दोनों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया. LLPs मतलब LLP इन प्रैक्टिस जो है, जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, तो LLP इज वेरी हेल्पफुल फॉर, मतलब LLPs जो है वो इंक्रीजिंगली प्रिफर्ड किया जाता है प्रोफेशनल्स और द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से. प्रोफेशनल्स क्यों ज्यादा प्रिफर करते हैं LLPs को? It is very helpful for chartered accountant, company secretaries, क्योंकि इन प्रोफेशनल फॉर्म्स वर्क जो होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है. रेपुटेशन इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. रिस्क अराइजेस ड्यू टू ह्यूमन एरर और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. So in traditional partnership form, if one partner commits a mistake, all partners becomes liable, even if they were not involved, as we discussed. So this was a big concern. LLP solve this problem. Each partner is not liable for the misconduct of other partners. Personal assets also protected in case of LLP, and liability is limited to the agreed contribution. This is why many professional firms in today's scenario convert partnership firms into LLPs. And in case of SMEs, why SMEs prefer LLP? SMEs want simple structure and low compliances, plus it must be cost effectively. So for SMEs, proprietorship is very risky and company is costly and complex. That's why LLP fits perfectly in between this. So separate legal entity है जो credibility increase करती है. Compliances are very lower in case of LLPs compared to the company, and easier management than corporate structure. This is why LLP is ideal for this consultancy firm. IT service providers are also preferred LLPs. Trading and service-based businesses and family-run businesses also expanding operations in case of LLPs. So SMEs LLP is popular because वो आपका मतलब प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है,
एसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं और कंप्लायंस बर्डन को काफी रिड्यूस करा जा रहा है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट वी डिस्कस क्रेडिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी that is why LLP is no longer an exception, it is become the norm. easily SMEs और प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल रहती है LLP फॉर्म करना. So the definition of LLP, as we discussed about this कि compliances कम है, cost भी कम है, flexibility है, but actual LLP क्या है? Clearly understand कि what LLP actually means in the eyes of law. The legal definition matter करती है. As per section 2 subsection 1 of clause N of LLP Act 2008, limited liability partnership means a partnership formed and registered under this act. Now this definition may look simple, but it has a very deep meaning. Let's break it down. Formed and registered under this act. The most important word here is registered. This means merely calling yourself as a LLP is not enough. Registration with registrar of LLP is compulsory. So without registration, LLP does not exist legally. Only after registration, LLP gets its legal recognition, its LLPIN number. Then LLP becomes eligible for limited liability protection. So registration is the birth of LLP. We can say that. LLP is a separate legal entity. Once registered, LLP becomes a separate legal entity. This means it is different from its partners. As in case of company, we know ना कि company separate legal entity है, directors अलग हैं. वैसे ही in case of LLP, it is different from its partner. It has its own PAN, bank account, properties. LLP can either enter into contracts. It can sue and be sued on its own name. So even if partner change हो जाएंगे, LLP continue to exist independently. This is the major difference from partnership firm. Partners are agent of LLP, and here the word that perpetual succession. Perpetual succession, it is another important feature flowing from this definition. Perpetual succession means LLP's existence is not affected by the death of the partner, the retirement of the partner, insolvency of the partner. Partners may come and go, but the LLP continues forever until legally dissolved. So this gives stability, continuity, confidence to the clients or banks. LLP, as in the name of this limited liability partnership. So even though LLP is a body corporate, it is still a partnership. This means partners manage the business directly. There is no separation between the owners and the managers like a company, and internal matters are governed by the LLP agreement. This is formed after the registration of LLP. So LLP keeps the soul of partnership, but adds the body of corporate protection. Perspective of changes. Okay. In practical terms, the definition tells us that LLP is not an informal arrangement. It is legally recognized business structure. Rights, duties, and liabilities are governed by the statutes. This is why LLP gives credibility, protection, and flexibility. LLP is a registered partnership form, partnership with the separate legal entity and perpetual existence where liability of partner is limited. परपेचुअल सक्सेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें. सैलरीज, कंपनसेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट टू द पार्टनर्स एज एग्रीमेंट डिसाइड्स द ऑल, एंड द नंबर ऑफ द पार्टनर्स के अपर लिमिट जो है मिनिमम 2 नंबर्स होना चाहिए, बट अपर लिमिट के लिए कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है उसके लिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है विड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल्स,
कोई मैंडेटरी मीटिंग्स और कंप्लायंसेस LLP के केस में एप्लीकेबल नहीं है. सेपरेट लीगल एंटिटी एज वी डिस्कस, एग्रीड कंट्रीब्यूशंस होता है लिमिटेड लायबिलिटी के लिए कि पार्टनर्स लायबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट दे कंट्रीब्यूट टू द LLP एंड द पर्सनल एसेट्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस डेब्ट्स. हाँ, इन केस ऑफ फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट द लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड. उस केस में पर्सनल एसेट्स को अलग नहीं रखा जाएगा. LLP continues even if partner change, as we discuss, perpetual successions, किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता. एंट्री एग्जिस्ट ऑफ द पार्टनर डजंट मैटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द LLP. देन मिनिमम 2 पार्टनर्स बट मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है. गवर्न बाय दिस LLP Act 2008 and administered by the Ministry of Corporate Affairs MCA. लीगल स्ट्रक्चर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है. LLP एंड पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में डिफरेंस है. लीगल स्टेटस LLP सेपरेट लीगल एंटिटी है बट पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. लायबिलिटी लिमिटेड होती है इन केस ऑफ LLP बट अनलिमिटेड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी. एट द टाइम ऑफ एट द स्टार्टिंग वी डिस्कस दैट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक LLP एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा और उसमें जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो क्लॉज है वो एक्टिव नहीं होता है. So registration is mandatory, but in case of partnership firm, it is optional. Compliances moderate रहता है और in case of partnership firm, the compliances are very minimal. Continuity perpetual successions है, may dissolve on partners changes in case of partnership firm. Ideal for professionals, SMEs and small traditional business के केस में partnership helpful रहता है. Difference between this LLP and private limited company. So structure partnership style है in case of LLP में, but private limited company और companies case it is a corporate structure. Compliance is low to moderate, but in case of companies it is very high. Audit conditional है. In case of companies it is mandatory. Funding limited रहता है और limited companies में strong options available रहते हैं. ओनरशिप पार्टनर्स की रहती है. इन केस ऑफ कंपनीज शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनीज. मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है बट फॉर्मल और बोर्ड ड्राइवन रहता है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. LLP एज वी डिस्कस सुटेबल फॉर द प्रोफेशनल्स और SMEs और स्टार्टअप स्केलेबल बिजनेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर वेरी सुटेबल. नाउ LLP Act 2008, Limited Liability Partnership Act 2008. It is the governing law for LLPs in India and it enforced on 31st March 2009 and administered by the Ministry of Corporate Affairs MCA. To create a business entity that combines operational flexibility of a partnership with limited liability similar to the company. This is the objective of LLP. LLP Act 2008 के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव बोला है कि आप द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्रिएटिंग द LLP, it provide a legal structure for small or medium enterprise to protect the partners from unlimited liabilities or to ensure proper regulations and transparency. It was specially designed keeping these professionals or SMEs in the mind. So this is the main objective. Administration, it is administered by this MCA, Minister of Corporate Affairs, and Registrar of Companies, वो हैंडल करता है इसको रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग्स रिलेटेड सारे कंप्लायंसेस. सो ऑल प्रोसेसेस जो हैं वो भी आप देखेंगे इसका सारा ऑनलाइन रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है और डिजिटली फिल्ड रहता है. It provide a simple or flexible secure business structure. Encourage professionals, SMEs to adopt a corporate style entity. It protect partners by limiting liabilities and promote ease of doing businesses with reduced compliances burden. Key features: it is a body corporate formed and registered under this act. Partners' mutual rights and duties are governed mainly by this LLP agreement. LLP agreement form किया जाता है जिसमें rights of the partners, duties of the partners already decided. And LLP has perpetual successions. Partners are agent of LLP, not of each other. They represent this limited liability partnership.
and internal management is largely left to the partners' discretions. Regulatory authority ROC है जो सारे returns और सब handles करती है. Key sections that are covered under this act is incorporation of LLP, then partners and designated partners, LLP agreement है, liabilities है partners LLP and partners की, then financial disclosures and compliances, binding of dissolution, penalties and offenses. These all are sections that this covered under this LLP Act. Some important forms are there under LLP rules. First one is Philip, that is incorporation of LLP. Then Form 3, that is for filing of LLP agreement. Form 8 is a statement of account and solvency. Form 11 is annual return. DIR 3, that is depend for designated partners. And run LLP, that is reservation of the name. LLP एक्ट जो है वो 2021 में अमेंड भी हुआ था जिसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे कि कॉस्ट एक स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया. पेनल्टीज काफी रिड्यूस की गई स्मॉल एंड स्टार्टअप एलएलपीज के लिए. देन डिस्क्रिमिनलाइजेशन हुआ है कुछ ऑफेंसेस का और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस किया गया है. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल फर्दर. नाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ LLP. The most important thing कि LLP फॉर्म तो करनी है बट कैसे करें. As the registration process is completely online through this MCA portal and is much simpler compared to this company incorporation. First step 1 is obtain digital signature, that is DSC. So it is required for all partners who will sign filing electronically. As you know, अभी डिजिटल सिग्नेचर के बिना तो कोई फॉर्म फाइल ही नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप आपको डिजिटल सिग्नेचर ले लेना है. दैट इज दिस इज इशूड बाय गवर्नमेंट अप्रूव, दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, मैंडेटरी फॉर फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स विद MCA, and it ensures authenticity and security of electronic documents. As all forms are filed online, physical signatures are not accepted. So without DSC, incorporation cannot proceed. The second step, obtain DPIN or DIN. The next, designated partner must have DPIN, that is designated partner identification number. As you DIN, director identification number जैसा होता है वैसे in case of LLP, the partners must obtain this DPIN, designated partner identification number. If a person already has DIN, then it can also be used here. And this number uniquely identified the designated partner in MCA records. Then third step is reserve name of LLP. इसके लिए run LLP form fill करना पड़ेगा. So file this run LLP reserve unique name through MCA portal. You can propose maximum 2 names in one application, and name must comply with this naming guidelines. LLP rules के हिसाब से should must be identical और मतलब identical होना चाहिए. कोई existing LLP कंपनी है उसके सिमिलर में नहीं होना चाहिए. Should end with this LLP limited liability partnership, and once approved, name is valid for 3 months. So name approval के लिए आपको run LLP form fill करके name का approval लेना पड़ेगा. And should not violate this trademark rules, वो भी violation नहीं होना चाहिए. And once approved, name reserve हो जाएगा. Then file incorporation form. Philip, that is form for incorporation of limited liability partnership. It is this form is the main incorporation form. It contains details of this proposed partners, designated partners, DPIN, the registered office address कहाँ का है, capital contribution कितना आ रहा है, business activities क्या क्या रहेंगी, जो NIC कोड है उसके हिसाब से. Then after verification, ROC issues this certificate of incorporation, and certificate of incorporation contains the LLP identification number. So आपको फॉर्म भरना है जिसमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी है. अप्रूवल पे रजिस्ट्रार इशू करेगा COI, that is certificate of incorporation, और उसके साथ आपको LLPN भी इशू हो जाएगा. So at that time, this is the
ऑफिशियल बर्थ ऑफ LLP, जब आप इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिलअप करके जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और LLPN आपको इशू हो जाता है. देन execute LLP agreement form 3. LLP agreement defines the rights and duties of the partners, profit sharing ratios, capital contribution क्या है, admission retirement of partners, decision making processes, and it must be executed on the stamp paper as per state stamp act. And form 3 must be filed within 30 days of the incorporation. So this LLP agreement form 3 ये आपको within 30 days of incorporation फाइल कर देना है the MCA. and it अगर आप ये फाइल नहीं करते हैं तो हैवी पेनल्टीज जो है वो आपको अप्लाई होगी. सो फॉर्म 3 मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. और इसमें आपकी सारे एग्रीमेंट में सब डिफाइन रहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस. सो इन सिंपल वर्ड्स मतलब आप पहले DSC अप्लाई करेंगे. DSC के बाद में DPI नंबर लेना है आपको, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं. उसके बाद LLP रन LLP दैट इज नेम रिजर्व करने के लिए एप्लीकेशन करना है. उसके बाद में दिस फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP वो फाइल करेंगे. उसके बाद में फॉर्म नंबर 3 दैट इज एग्जीक्यूट ऑफ LLP एग्रीमेंट वो विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करना है. एंड द लास्ट स्टेप दैट इज जब आपका LLP नंबर आ जाता है, आपने LLP एग्रीमेंट भी कंप्लीट करके फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिया है, आप फिर टैन और दूसरे जो भी रजिस्ट्रेशन है, GST रजिस्ट्रेशन एज पर द बिजनेस, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, GST रजिस्ट्रेशन लेना है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है, या कोई प्रोफेशनल टैक्स है, MSME उद्यम, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और बैंक अकाउंट ओपन करवा के यू कैन प्रोसीड विद द LLP. एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन मैंने यहाँ पे दिया है कि DSC विद इन 1-2 days भी नहीं होता, अभी तो एक दिन में 1-2 घंटे में बन के आ जाती है. देन नेम अप्रूवल में 1-3 days है. दैट दिस फिलिप फॉर्म का अप्रूवल 3-7 days में आ जाता है. LLP एग्रीमेंट फाइलिंग जो 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन है. सो टोटल टाइम फॉर फॉर्मेशन 7-15 days वर्किंग डेज इसमें लगते हैं LLP फॉर्मेशन. Yes, LLP agreement. Form number 8. LLP agreement most important document है in case of LLP. We can say that if the LLP is a body, the LLP agreement is its backbone. So इतना important है. LLP agreement एक written contract है between the partners. It defines the rights of the partners, duties of the partners, profit sharing ratio, capital contribution, decision making powers. So we can say that it is similar to this partnership deed in case of partnership firm, or article of association in case of companies. उससे हम compare कर सकते हैं. The LLP Act gives a flexibility to the partners, or partners can design their internal rules as per their business needs. So without a proper agreement डिस्प्यूट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, रोल्स भी क्लियर नहीं होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंफ्यूजन होगी. सो एक क्लियर एग्रीमेंट ये सब जो फ्यूचर लिटिगेशंस है उसको प्रिवेंट करता है. मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द 30 days, मस्ट बी फाइल्ड विद ROC थ्रू फॉर्म 3 विद इन द सेम टाइमलाइन, एंड डिले अगर आपने किया तो हैवी पेनल्टी रहेगी इस केस में. कौन कौन से क्लॉज कवर है? तो फर्स्ट वन इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि ईच पार्टनर व्हाट अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. Then the mode of contribution, whether cash, property, assets or services, etc. Then variation in contribution and related procedures. Profit sharing ratio, percentage of profit allocated to each partner can differ from capital contribution. Adjustment for the admission or retirement of the partners. Then rights and duties, कि भाई मैनेजमेंट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी पार्टनर की, वोटिंग राइट्स कितना है, अथॉरिटी लिमिट कितनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे कितना एक्सेस कर सकते हैं. देन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड सक्सेशंस ऑफ पार्टनर्स. इन दिस द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू पार्टनर, कंडीशंस फॉर विड्रॉवल और रिटायरमेंट क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन एग्जिट, किस तरीके से जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का या पार्टनर एग्जिट कर रहा है तो उसका सेटल कैसे करना है. देन डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट मैटर्स रिक्वायर्स unanimous consent
Then matters which requires majority consent, roles and authorities of designated partner. So this is helpful in case of decision making and management. और इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी क्लॉज इसमें ऐड किया है कि मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट उसमें मीडिएटर की मीडिएशन के थ्रू होगा या आर्बिट्रेशन रहेगा या कोई लीगल एक्शन है, जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, गवर्निंग लॉज क्या क्या रहेंगे, कौन सी जुरिस्डिक्शन के एप्लीकेबल होंगे. देन इंडेमनिटी एंड लायबिलिटी, सो कंडीशंस अंडर विच पार्टनर्स इंडेमनिफाई एलएलपी and the consequences of fraudulent or authorized act. So there is also a clause of indemnity and liability. Partner की क्या limited liabilities रहेगी. Then execution requirement. So stamp paper पे stamp act के हिसाब से execute करना है, signed by all the partners, witness signatures भी होने चाहिए and form 3 में ROC को file करना है. Now why LLP agreement is very essential? क्यों इतना important है? एज वी डिस्कस ना कि कोई डिस्प्यूट इन केस फ्यूचर में अराइज होता है, कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो प्रिवेंट करता है. क्लैरिटी ऑन ऑपरेशनल्स और रूल्स, उसके रिलेटेड क्लैरिटी प्रोवाइड करता है एक एग्रीमेंट. इफ वी एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट तो उससे क्लियर हो जाएगी कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या है. देन प्रोटेक्ट पार्टनर्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटीज. It also ensures smooth entries and exit of the partner, क्योंकि रिटायरमेंट और उसके रिलेटेड सारे क्लॉज LLP एग्रीमेंट में दिए हुए हैं. एंड इट ऑल्सो गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन इंटरनल मैनेजमेंट एज पर बिजनेस नीड्स. यस, तो LLP एग्रीमेंट अगर हम फाइल नहीं करते हैं तो जो फर्स्ट शेड्यूल है LLP एक्ट का वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा. और उस केस में मतलब फर्स्ट शेड्यूल में ऐसा है कि इक्वल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहता है और इक्वल राइट्स है मैनेजमेंट में, तो वो कोई भी बिजनेस को सूट नहीं करेगा. इसलिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट का ड्राफ्ट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. LLP gives flexibility, but that flexibility works only then LLP agreement is properly drafted and filed. जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से मिल रही है, अगर हम वो एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करेंगे तो हमें वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपरली नहीं मिलेगी. सो इफ यू फाइल अ प्रॉपरली ड्राफ्टेड LLP एग्रीमेंट then it is very helpful to organize or to manage this LLP. The next one is rights of partners. Partners have a right to participate in the management. Every partner has a right to take part in business activity or to participate in decision making. So unlike a company, there is a no separation between the owners and the managers. Partners are actively involved in the management. Then second one is right to access books and records. Partner can inspect and copy LLP books, financial statements, and statutory records, and it ensures transparency and informed decision making. Right to share profit. So partners are entitled to aggregate share of the profit as per this LLP agreement. And in the absence of agreement, as I told ना कि equal profit sharing ratio हो जाएगा, तो वो partnership agreement अगर LLP agreement अगर फॉर्म होता है तो उस हिसाब से जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस ऊपर जो एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो फॉलो करना रहेगा. Rights to indemnification. Partners are entitled to indemnify by the LLP for expenses incurred in the ordinary and properly condition of the business conduct of the business, and the protection of act done in good faith. A right to express opinion and vote. Partners may vote on all the business matters. Voting rights may be equal or based on the contribution as specified in the agreement. Then right to access and receive information. कोई भी इंफॉर्मेशन जो पार्टनर्स को मतलब पार्टनर्स के लिए हेल्पफुल है वो उनके पास राइट है कि वो एक्सेस कर सके और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करें. राइट टू फुल डिस्क्लोजर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, ऑपरेशंस एंड डिसीजंस ऑफ द LLP एंड critical for the accountability and trust. Right to assigning economic interest. A partner can transfer their economic right, that is profit share, with consent as per LLP agreement. अगर LLP agreement में उसने कंसेंट दिया है और वो फॉर्म किया है, देन ही कैन
transfer their economic concern. Or however, management rights cannot be transferred without approval of other partners. तो वो एग्रीमेंट में क्लॉज उस तरीके से इंक्लूड है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है. Then right to continue in LLP. Partners have the right to continue partnership unless expelled as per LLP agreement, or it offers stability and protection from arbitrary removal. Then right against unfair prejudice. Partners can seek remedies if actions of other partners are oppressive, fraudulent, or prejudicial, and it ensures fairness with the LLP framework. Yes, so these all are the rights. After that, there are some duties, because rights always comes with responsibilities. So LLP is built on this mutual trust or good faith. So duties are very important. The first one is duty to act in a good faith. Every partner must act honestly, work in the best interest of LLP, and avoid personal benefit at the cost of LLP. This is called the duty of good faith. Decision should promote the LLP's success and protect its reputation. Then, duty to carry out responsibilities diligently. Partner must perform their assigned duties with reasonable care, skills, and diligence, and professional standards should be maintained at all times. And then duty to comply with LLP agreement. LLP agreement must be formed and filed with the ROC, and any deviation requires mutual consent of the partners. Duty to indemnify for wrongful act. Partners must compensate the LLP for any loss caused due to fraud, negligence, or misconduct. So personal liability arises only in case of wrongful actions. As LLP defines the limited liability, but in case of fraudulent act, there is no limited liability. Personal liability also attached with this. Duty to maintain confidentiality. Partners must not disclose sensitive or confidential business information. Obligation continues even after ceasing to be a partner. मतलब ऐसा नहीं कि LLP छोड़ दी उसके बाद में information कर दो तो allowed नहीं है. Then duty to account for personal profit. Partners must not make any secret profit or compete with LLP business. Any benefit gain must be disclosed and accounted for to the LLP. Duty to contribute as agreed. जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन या जो स्किल्स का एग्रीमेंट में डिस्क्लोजर किया है उस हिसाब से उनको कंट्रीब्यूट करना रहेगा. फेलियर टू कंट्रीब्यूट में लीड टू पेनल्टीज और रिडक्शन ऑफ द राइट्स. Then duty to avoid conflict of interest. Partners should avoid situations where personal interest conflict with LLP interest. So full disclosures must be made when such situations arises. Then duties to cooperate with other partners. Partners must work collaboratively to ensure smooth functioning of the LLP. Dispute should be resolved through mutual understanding and agreed mechanisms. ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफर राइट विदाउट कंसेंट. जो राइट्स में भी हमने देखा था राइट्स ऑफ द पार्टनर्स में. पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग राइट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर्स. एंश्योर कंट्रोल रेस्ट विद एग्रीड मेंबर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. जो हमने स्टेप्स देखे थे फॉर्मेशन ऑफ दिस LLP, तो सेकंड था ना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को DPI नंबर लेना रहता है. और कौन मतलब इसमें LLP में पार्टनर्स जो बनते हैं वो उनका मीनिंग मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर इज द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस ऑफ द LLP. दे एक्ट as the principal point of the accountability under LLP Act 2008. Okay. This designated partners are special partners responsible for this legal and compliance matters, similar to the directors in the company. इनके मतलब जो compliance purpose के लिए जो directors का role रहता है उसी तरह से यहाँ पे designated partners हैं. Even though all partners manages this business
but designated partners are especially responsible for this all statutory filings and all. और एज वी डिस्कस ना कि मिनिमम नंबर पार्टनर्स के पार्टनर्स 2 होने चाहिए इसमें, बट मैक्सिमम नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है. एटलीस्ट वन मेंबर मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया, वो रेसिडेंट पार्टनर होना चाहिए. देन eligibility criteria must be an individual, not a body corporate. If a company is a partner, its nominee can act as a designated partner. Must obtain a designated partner identification number or DIN. DIN होगा तो भी चलेगा. ये डीपीआई नंबर से एक वो रहता है ना कि ये एक इंश्योरिटी देता है कि गवर्नमेंट ऑल्सो ट्रैक द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, जो डीपीआई नंबर और डिन नंबर जो अलग किया जाता है उसके बेस पर. द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज: ensuring compliances with LLP Act and filing of statutory returns, that is the statement of account and solvency form 8 or annual return form 11. Maintain books of accounts and records representing the LLP before authorities. It ensures timely payment of the taxes, statutory dues and regulatory filing. तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डेजिग्नेटेड पार्टनर की कि आपको टाइमली एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न्स फाइल करने हैं, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं, कंप्लायंस विद एलएलपी एक्ट हो रहा है या नहीं. इफ एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लायबल होंगे उस केस में. Then liability of designated partner, liable for the penalties arising from non-compliances, और personal liability वो in case of fraud होगा या gross negligence या willful default होता है, उस केस में personal liability also arises. Then appointment and changes, so designated partners are appointed through incorporation of documents or supplementary LLP agreements. और अगर कोई भी changes है उसमें तो must be filed with the registrar in form 4 within the prescribed time. Then rights of designated partner, तो सेम कि भाई वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइक एनी अदर पार्टनर. राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द एलएलपी फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ, और राइट्स टू एक्सेस रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज. जो हमने राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखे उस हिसाब से वो राइट्स भी इनको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को एप्लीकेबल है. देन importance of LLP governance, to ensure proper functioning, compliance and credibility of LLP and act as the governance backbone of LLP structure. Yes, so designated partners जो है वो partners हैं, but मतलब you can say that all the designated partners are partner, but not all partners are designated partners. मतलब designated partners carry this extra compliance responsibilities. तो सारे पार्टनर्स को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बोल सकते, बट जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है दे कैन मतलब कंसीडर एज अ पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी. Now this taxation of LLP. Status under Income Tax Act. LLP is treated as a partnership form for taxation purpose. Taxes levied on the LLP itself, not on individual or the partners. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म को टैक्स जो टैक्सेशन का क्राइटेरिया है उसी तरीके से एलएलपी को भी टैक्स एप्लीकेबल होता है एलएलपी इटसेल्फ, एलएलपी ना कि पार्टनर्स और मतलब पार्टनर्स और इंडिविजुअल पार्टनर्स के ऊपर नहीं. पार्टनर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम द एलएलपी. जो पार्टनरशिप फॉर्म में भी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहता है जो एग्जेम्प्ट रहता है, सेम वे यहाँ पे भी. इनकम टैक्स रेट फ्लैट टैक्स रेट है 30% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसमें 12% सरचार्ज इफ इनकम एक्सीड 1 CR, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज. सो इफेक्टिव रेट जो है मतलब नॉर्मल इनकम 30% प्लस 4% दैट इज 31.2%, और विथ सरचार्ज अप्रोक्सीमेट दिस 34.94%.
LLP is also subject to this alternate minimum tax, that is AMT, at 18.5% of adjusted total income plus cess. ये एप्लीकेबल होगा जब LLP टैक्स डिडक्शन बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं अंडर सर्टेन सेक्शन, दैट इज दिस 80 AIA और 35A. देन टैक्सेशन ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के केस में सेम रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को पे किया जाता है वो अलाउ है एज अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 40 क्लॉज बी, subject to limit, that is on the first 3 lakhs of book profit 90% or 1.5 lakh whichever is higher, and on the balance book profit 60%. Okay. Interest on capital is 12% per annum. As mentioned earlier, share of profit is fully exempt in hands of partners. Another key benefit is this: no dividend distribution tax applies to the LLP. Profits can be withdrawn by the partners without additional tax. In case मतलब in terms of compliances अगर देखें तो tax audit under section 44AB required when turnover exceeds 1 CR or rupees 10 CR where this cash transactions are within 5%. MAT is not applicable, minimum alternate tax. This is applicable only to the companies. Only AMT applies here. Advance tax है कि LLP must pay advance tax if tax liability exceeds 10,000 in 4 installment, that is June, September, December or 15th March. Then compliance requirement, ITR 5 applicable in case of LLP, maintains proper books of accounts, TDS deduction where applicable. Now ओवरऑल टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन इज रिलेटिवली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक फ्लैट टैक्स रेट है, प्रॉफिट एग्जेम्पशन है पार्टनर्स को, कोई डीटीटी एप्लीकेबल नहीं है, एएमटी अप्लाई करता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, सारे कंप्लायंसेस जो भी है रिक्वायरमेंट वो शुड बी कीप इन द माइंड. ओके, रूटीन कंप्लायंसेस. टैक्सेशन को लेके एक डाउट है हर्षल जी को. हाँ जी सर. Can you please confirm if surcharge is charged at highest rate in capital gain for LLP? Sorry sir, capital. Can you please confirm if surcharge is charged at highest rate in capital gain for LLP? Okay. मे बी अप्लाई सर, उस केस में रहेगा, मतलब अगर सरचार्ज ज्यादा है तो उस हिसाब से फिर वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में लगेगा टैक्स. ठीक है, ठीक है. और एक ने किसी ने लिखा स्टैम्प पेपर वैल्यू, ये शायद रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कुछ बताया होगा. हाँ, वो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से जो स्टैम्प पेपर पे रजिस्ट्रेशन करना है तो जो स्टेट का एक्ट होगा, मतलब स्टेट का जो स्टैम्प ड्यूटी रहेगी उस हिसाब से एप्लीकेबल होगा. ठीक है, ठीक है. Okay, so routine compliances are just this annual statement of account and solvency declaration, form 8 आपको जो fill करना है within 30 days of expiry of 6 months from the end of the financial year, that is by 30th October every year. ये LLP form number 8 जो account and solvency declaration के related form है. Then returns to be filed under all the applicable laws. एनुअल रिटर्न है जो विद इन 60 डेज में आपको फाइल करना है, कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30th May ऑफ एवरी ईयर. एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स जो कवर्ड अंडर द LLP, मतलब अगर ऑडिट में कवर्ड है तो 30th September है, और इफ नॉट कवर्ड अंडर द ऑडिट देन 31st July. एनुअल कंप्लायंसेस, यही फॉर्म 8 एनुअल में जो फॉर्म 11 रहेगा एनुअल रिटर्न, जो रूटीन कंप्लायंसेस हमने देखा उसी के रिलेवेंट है कि फॉर्म 11 आपको 30th May जो एवरी ईयर है वो ड्यू डेट रहेगी आपकी. उसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेगी पार्टनर्स की, उनका कंट्रीब्यूशन, कोई चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, देन इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द LLPs इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी. तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई बिजनेस कुछ किया नहीं तो हम इससे एग्जम्प्ट है, ऐसा नहीं है, वो आपको कंप्लायंस के तौर पे कंपल्सरी फाइल करना ही है. नॉन फाइलिंग आपको पेनल्टी हैवी पेनल्टी लग सकती है उस केस में. देन फॉर्म 8
उसकी ड्यू डेट 30th अक्टूबर एवरी ईयर। इसमें क्या रहेगा, तो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन रहेगा बाय ऑल दिस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, देन स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, and must be signed by 2 designated partner and certified by the CA. Then books of accounts. So LLP must maintain books on cash or accrual basis using this double entry system. Books must be kept at the registered office and mandatory for audit and compliance checks. Statutory audit if applicable. So अगर आपका turnover more than 40 lakhs और capital contribution exceeds ₹25 lakhs, then आपको statutory audit compulsory है, and audit must be conducted by practicing chartered accountant. इनकम टैक्स रिटर्न में ITR 5 ड्यू डेट वही 31st जुलाई इफ ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, और 30th सितंबर रहेगा इफ ऑडिट एप्लीकेबल, एंड मस्ट इंक्लूड दिस बैलेंस शीट, P&L, पार्टनर्स एंड डिटेल्स, ऑडिट रिपोर्ट्स इफ एनी. DIR 3 KYC for designated partner. Every designated partner holding DIN must file DIN KYC annually, and उसकी ड्यू डेट आपकी 30th सितंबर एवरी ईयर रहता है, और नॉन फाइलिंग जो है तो वो डीन कैंसर डीएक्टिवेट हो सकता है उस केस में. इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस हैं कि अगर आपके LLP एग्रीमेंट में कोई चेंजेस होता है तो उस केस में आपको फॉर्म 3 फाइल करना है. अगर पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स में कुछ चेंज है देन यू हैव टू फाइल फॉर्म 4. फॉर्म 15 is for changes of registered office. Then form 22, the report of orders from court or tribunals. And event based compliances जो है वो within 30 days unless otherwise specified, मतलब जो भी changes हो रहा है उसके within 30 days में आपको ये फॉर्म फिलअप करके compliance जो changes है वो अपडेट करवाने हैं ROC. Then other tax and regulatory compliances depending on the nature of business, LLP may need GST return if registered, TDS TCS return वो applicable होगा तो PF ES filing if applicable, and professional tax in relevant states. Penalties for non-compliances. In case of this LLP जो penalties है ना वो काफी heavy है कि अगर आप लेट फाइलिंग करते हो कोई फॉर्म दिस 8 और फॉर्म 11 तो ₹100 पर डे विथ नो अपर लिमिट, मतलब उसकी कोई अपर लिमिट ही नहीं है. ₹100 पर डे से आपको पेनल्टी है. और फॉर एग्जाम्पल कि भाई 100 डेज डिले हो रहा है तो 10,000 हो रही है, डिले ऑफ 1 ईयर है तो 36,500 हो जा रहा है. तो डिले कैन बिकम वेरी कॉस्टली. जितना हो सके उतना, अगर डिले हो भी गया है तो जल्दी से जल्दी फाइल करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपर लिमिट नहीं है, सो वेरी कॉस्टली फॉर द LLP. Heavy fines for persistence or non-compliances. Designated partners may face additional penalties or prosecutions, क्योंकि हमने आगे देखा कि designated partners की liability है कि वो timely सारे compliances करें. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो designated partners are also responsible. तो monetary penalty हो सकती है, legal consequences भी हो सकते हैं. Importance of compliances, it enhances credibility and legal standing, keeps LLP active and in good standing with MCA, avoids penalties, prosecutions and closures, essentials for fundraising, loans and business contracts. तो वो तो वही कि जितना अच्छा उनका कंडक्ट रहेगा कि सारे कंप्लायंसेस टाइमली फाइल किए गए हैं, फॉर्म सारे टाइमली फिल किए गए हैं, सारे रेगुलेशन सारे कंप्लाई हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो LLP है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा. फंड रेजिंग से लेके कोई लोन्स एडवांसेस या कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है LLP की. पेनल्टीज. लेट फाइलिंग 100 है, नो मैक्सिमम लिमिट. पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी उसमें भी सेम ₹100 पर डे फॉर डिफॉल्ट है. नॉन फाइलिंग अफेक्ट्स कंप्लायंस स्टेटस ऑफ LLP. कंपल्सरी फॉर LLP रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं है कि भाई टर्नओवर कम है या ज्यादा है तो पेनल्टी ज्यादा या कम होगी. देन नॉन फाइलिंग ऑफ LLP एग्रीमेंट दैट इज फॉर्म 3, तो उस केस में पेनल्टी 5,000 पर डे है फॉर डिफॉल्ट, और फाइलिंग रिक्वायर्ड वो 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताया हुआ है. फेलियर में लीड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर. As we discussed ना कि designated partners are responsible for this all compliances.
देन नॉन फाइलिंग ऑफ इवेंट बेस्ड फॉर्म, जो आगे हमने देखे कि फॉर्म 415, तो फॉर्म 4 अगर पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में कोई चेंज है तो 5,000 पर डे है। अगर फॉर्म 15 विद इन टाइम फाइल नहीं किया है तो 5,000 पर डे। और फॉर्म 3 दैट इज अमेंडमेंट टू एलएलपी एग्रीमेंट फाइल नहीं हुआ है तो 5,000। तो दिस फॉर्म 3, 15, फॉर्म 4 और फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट, वो सब में आपको 5,000 रुपीज पर डे पेनल्टी रहेगा। देन पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लायंसेस, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर पर्सनली लायबल होंगे कि वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किए हैं, एनुअल रिटर्न्स या स्टेटमेंट टाइमली फाइल नहीं किए हैं, और कंप्लायंस रिलेटेड विद दिस एलएलपी एग्रीमेंट प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किए हैं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एंड पेनल्टीज कैन इंक्लूड मॉनेटरी फाइन और प्रोसिक्यूशंस। फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट में पार्टनर्स अगर इन्वॉल्व है कोई भी फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन या रॉन्गफुल एक्ट में, देन दे आर लायबल पर्सनली और अनलिमिटेडली। एलएलपी कैन नॉट शील्ड पार्टनर इन सच केसेस, और दे कैन लीड टू सिविल और क्रिमिनल एक्शंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंसेस, तो वही जो हमने आगे देखा कि आपकी क्रेडिबिलिटीज बैंक और क्लाइंट्स के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ एक एनहांस होती है। टाइमली कंप्लायंसेस अगर रहेंगे तो हैवी फाइन और पेनल्टीज से बचा जा सकता है। गुड स्टैंडिंग विद आरओसी और एमसीए, और प्रोटेक्ट पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, फंड रेज कर सकते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स, बैंक्स और एनबीएफसीज। ओनली वन पार्टनर इन एलएलपी, देन द सोल पार्टनर कैन फंड अ न्यू वन without dissolutions. Post incorporation and LLP can have limitless partners, and the partners of the LLP have the right to manage the business directly. We will discuss this in this next slide one by one. Limited liability protection. पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन एग्री किया है उतने तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। एंड द पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम द बिजनेस डेट, जिसमें एक एक्सेप्शन हमने शुरू से पढ़ा है, दैट इज फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट के केस में। सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट, sue and be sued in its own name, ensure continuity even if partner changes. Perpetual successions continue even partners may come or may go. Admission, retirement, death does not affect the LLP existence. Flexibility of management, so partners can define rights, duties and profit sharing ratio through this LLP agreement, and less rigid than a private company. कोई मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स या एजीएम्स इन केस ऑफ एलएलपीज आर नॉट। कंप्लायंसेस काफी कम रहते हैं। एनुअल फाइलिंग है खाली एक फॉर्म 8 और फॉर्म 11 इज रिक्वायर्ड, एंड कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग है फॉर एसएमईज एंड प्रोफेशनल फॉर्म्स। टैक्स बेनिफिट्स, तो टैक्स एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, प्रॉफिट शेयर्स रिसीव बाय द पार्टनर्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स आर डिडक्टेबल फॉर द एलएलपी, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में रहता है उसी तरह से। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन, ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस वाया एमसीए पोर्टल, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफी सिंपल और क्विकली अप्रूवल है, सुटेबल है फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ideal for this professional or SMEs. It provides the credibility of corporate structure with the simplicity of the partnership form. Then there are some limitations. The first one is cannot issue shares. LLP cannot raise capital by issuing equity shares, जो companies के केस में होता है। तो limits ability to attract investors like ventures, capitalists और private equities. तो इस केस में मतलब जो शेयर्स वगैरह है वो इन केस ऑफ एलएलपी इश्यूज नहीं कर सकते कि हम ऐसा सोचें कि एलएलपी फॉर्म किया और मतलब ये वेंचर कैपिटल फंडिंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर स्टार्टअप प्लानिंग और लार्ज एक्सपेंशन है तो फिर कंपनी स्ट्रक्चर प्रिफर करना चाहिए, ना कि एलएलपी। अगर हैवी मतलब ये चाहिए आपको फंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग हैवी चाहिए, तो आपको एलएलपी उस केस में सुटेबल नहीं रहेगी। Then limited access to funding,
Banks or financial institutions may prefer companies over LLPs for loan, or funding options are generally restricted to partners' capital and internal accruals. मतलब कंपनी स्ट्रक्चर काफी रेगुलेटेड होता है और गवर्नेंस सिस्टम भी काफी स्ट्रिक्ट रहता है इन केस ऑफ कंपनीज. तो बैंक और इन्वेस्टर्स जो है वो उस टाइम पे काफी केसेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को प्रीफर करते हैं. तो एलएलपी को ये एक लिमिटेशन है लोन रेज करने के लिए या फंड रेज करने के केस में. Compliance required. Though simpler than companies, LLP still has mandatory compliance. Annual filing जो हमने देखा Form 8 और Form 11 का, then LLP agreement Form 3 और statutory audit अगर turnover और capital the threshold limit cross करते हैं उस केस में. नॉन कंप्लायंसेस में पेनल्टीज और जो प्रोसिक्यूशन है वो काफी हाई रहेंगे. No public listing. LLPs cannot be listed on a stock exchange or investors cannot trade until trade units like shares of the company. तो वो limitations तो LLP के केस में रहेगी. Liability exceptions. Limited liabilities does not apply in case of fraud or wrongful act, or partners may be personally liable in such situations. Then less suitable for large scale business. तो वो हमने देखा कि अगर बिजनेस आप मतलब कुछ रैपिड एक्सपेंशन और मल्टीपल राउंड्स ऑफ इक्विटी फंड्स आपको चाहिए तो उस केस में एलएलपी आप सुटेबल नहीं है. गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में बिकम कॉम्प्लेक्स एज द नंबर ऑफ पार्टनर्स उसमें इंक्रीज होते हैं. एंड रिकॉग्निशन इश्यूज. LLPs may be less recognized internationally compared to the private limited companies or may faces difficulties in cross-border contracts or foreign investment. So this all are the limitations कि मतलब लेट फीस वगैरह ज्यादा रहती है, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए फुल नहीं है, सुटेबल नहीं है. और एलएलपी मतलब एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए एक्सेलेंट है, बट लार्ज स्केल और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो उस केस में एलएलपी हेल्पफुल नहीं रहेगा, उस केस में आइडियल नहीं है. सो बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब आप कैसा चूज कर रहे हो वो आपका मतलब डिपेंडिंग होता है कि आपका साइज, बिजनेस का साइज क्या है, फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है उसके ऊपर. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन इनटू एलएलपी. Conversion refers to this changing the existing business structure into LLP. तो मतलब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से LLP में कन्वर्ट हो रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म से LLP कन्वर्ट कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड फॉर्म से सोल प्रोप्राइटरशिप से LLP में कन्वर्जन कर रहे हैं. तो उस केस में तो एज वी डिस्कस ना कि बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे. तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी पार्टनरशिप की विथ लिमिटेड लायबिलिटीज के साथ में. कंप्लायंस बर्डन कम हो जाता है, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्शन मिलता है, क्रेडिबिलिटी विद द बैंक्स और क्लाइंट्स एनहांस होती है. तो ये सब इसका बेनिफिट्स है. दैट्स व्हाई हम मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फॉर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनर एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं. एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन. तो प्राइवेट कंपनीज के केस में मस्ट नॉट बी एंगेज्ड इन एनी इलीगल बिजनेस एंड शुड बी सॉल्वेंट, तो ही आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे. इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म all partners must consent to the conversion. सभी partners agreed होने चाहिए. In case of unregistered firms, must registered as a must registered as a LLP to avail legal recognition and limited liabilities. प्रोसीजर्स सेम, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हमने देखा था कि भाई डीएससी डीपीआईएन लेना है, नेम रिजर्वेशन करवाना है, रन एलएलपी फॉर्म से इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, देन this application for conversion of company of firm into LLP, वो एक फॉर्म 17 आपको फाइल करना पड़ेगा इन केस ऑफ फॉर्म फॉर इन केस ऑफ कन्वर्जन. तो उसके साथ आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द क्रेडिटर्स, देन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट ईयर्स के, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, देन कंसेंट लेटर्स. ये आपको एक स्टेप इसमें ज्यादा रहेगा जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके हिसाब से. देन एग्जीक्यूट एलएलपी एग्रीमेंट विद इन 30 days ऑफ कन्वर्जन. राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, शेयरिंग पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स का वो सब डिसाइड करना है. Then certificate of incorporation ROC will issue with LLP and conversion is complete from this date.
Key consideration: all assets and liabilities transfer to the LLP automatically. Then existing contracts continue in LLP names. Shareholders of the company or partners of the firm become partners of this LLP. And tax implications must be reviewed before conversions. तो वो जो चेंज ओवर रहेगा उस हिसाब से क्या है वो आपको दिखना रहेगा. एडवांटेज वही कि लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन है. देन कंप्लायंसेस एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है. business continuity of the business and credibility with stakeholders और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर्स. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो एक लीगल रिकॉग्निशन या आप प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म और प्राइवेट कंपनी से कन्वर्जन करते हैं तो वो जो लीगल रिकॉग्निशन है बिजनेस स्ट्रक्चर का वो आपको बेनिफिट मिलेगी. LLP Amendment Act. In the starting, we discussed about this. So here we will discuss in detail कि जो चेंजेस हुए वो क्यों, मतलब किस वजह से चेंजेस. जो एलएलपी एक्ट 2008 था वो 2021 में कुछ की चेंजेस लाए गए थे इसमें. इसका मेन एम कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूसेस पेनल्टीज एंड डिस्क्रिमिनाइज सर्टेन माइनर ऑफेंसेस. पेनल्टीज हमने जो देखा कि एलएलपी एक्ट में पेनल्टीज काफी हाई है. 100 रुपीज पर डे, जिसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं है, और 5000 पर डे के हिसाब से जो फॉर्म्स अगर हम फिलअप नहीं करते हैं. तो ये जो चेंजेस, मतलब इसका मेन वही कि एलएलपी काफी बिजनेस फ्रेंडली बन सके. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अमेंडमेंट वाज कि आपका बिजनेस एलएलपी जो है वो बिजनेस फ्रेंडली बन सके, साथ में जो क्रिमिनल लायबिलिटीज है उसको कम किया जाए, और दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको एनकरेज करने के लिए ये चेंजेस किए गए. Focus on a startup or small LLPs and compliances simplifications. वो main focus area है in case of this amendment or this changes. Key highlights of the amendment. The first one is discrimination of certain offenses. मतलब कुछ जो पहले था earlier, जो many procedural defaults जो थे ना वो as a criminal offense treat किए जाते थे. तो आफ्टर अमेंडमेंट माइनर और टेक्निकल डिफॉल्ट्स जो है उनको मतलब एक कन्वर्ट कर दिया गया इनटू दिस मॉनेटरी पेनल्टीज में. सो नो क्रिमिनल ऑफेंसेस फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, इसके लिए मॉनेटरी पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई. सो दिस रिड्यूसेस फियर अमंग द दिस एंटरप्रेन्योर्स. देन स्मॉल एलएलपी कॉन्सेप्ट, वो उसका इंट्रोडक्शन ये चेंजेस में किया गया था. न्यू कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस दिस स्मॉल एलएलपी. इसका बेनिफिट यही है कि आपकी पेनल्टीज लोअर रहेंगी, एक कंप्लायंसेस में भी थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा, साथ में जो फाइलिंग फीस है वो कम रहेंगी. सो दिस सपोर्ट दिस स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी हेल्पफुल रहा, जिसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेस देन 25 lakhs और टर्नओवर लेस देन 40 lakhs वो क्लासिफाई किया गया एज अ स्मॉल LLP. रिड्यूस पेनल्टीज, तो जो फाइलिंग फॉर्म्स की जो लेट फाइलिंग फॉर्म्स फी थी और नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स या कोई भी डिफॉल्ट्स में जो पेनल्टीज था उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया. एम्स टू रिड्यूस द कंप्लायंसेस बर्डन ऑन दिस LLP. ईजिंग कंप्लायंसेस कि भाई फॉर्म फाइलिंग प्रोसीजर्स को और सिंप्लीफाई किया गया, साथ में एनुअल फाइलिंग रिमेन्स मैंडेटरी बट सिंपलर फॉर स्मॉल LLPs के केस में. फास्ट ट्रैक वाइंडिंग अप, तो एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ द सॉल्वेंट LLPs इंट्रोड्यूस किया गया, और एनकरेज क्लोजर ऑफ डोरमेंट LLP विदाउट लेंदी लीगल प्रोसीडिंग्स. मतलब कभी आता ऐसा होता है ना कि इतनी कंप्लायंसेस कौन करेगा, रहने तो नहीं बंद करते, क्लोज नहीं करते हैं. तो उस केस में ये उसको एनकरेज करने के लिए कि भाई अगर कोई डोरमेंट LLP है, काम नहीं कर रहे हैं, चल रहा है यूं ही, कोई कंप्लायंसेस भी नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में उसको बंद करने के लिए ये जो चेंजेस लिए गए, जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ताकि आप इजीली वाइंड अप कर सको उसको. Practical implications: startup and SMEs can now adopt LLP structure with lower compliances cost, encourages formalization of small businesses, minimize risk of prosecution for minor procedural lapse, or increase flexibility in management and operational decisions. So there's all, मतलब ये अमेंडमेंट जो लिए गए वो LLP को मोर फ्लेक्सिबल और
मतलब लेस रिस्की, और साथ में जो बिजनेस है मतलब उसको अट्रैक्टिव करने के लिए कि मोर अट्रैक्टिव फॉर द बिजनेस, उस वैसा बनाने के लिए ये चेंजेस किए गए. इट अलाइन विद दिस LLP ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इसका मेन एम ही वही है. Conversion of partnership form to LLP case study I have taken here. In XYZ partnership form with 3 partners decide to convert into LLP. So each partner contributed rupees 10 lakhs to the business. Objective is combine flexibility of partnership with limited liability and reduce compliance cost. Conversion highlights में क्या रहेगा कि partnership firm registered as a LLP under LLP Act 2008. Partners become designated partner responsible for statutory compliances. Executed detailed LLP agreement outline, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी पार्टनर्स की, देन डिसीजन मेकिंग पावर्स, कोई एडमिशन रिटायरमेंट है पार्टनर्स का तो वो ये सब आपका LLP एग्रीमेंट में कवर रहेगा. देन लायबिलिटी एस्पेक्ट में तो पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन दैट इज रुपीज 10 lakhs ईच. एक्सेप्शन है कि अगर फ्रॉड या कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल रहेंगे, और प्रोटेक्ट करता है पर्सनल एसेट्स इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑपरेशंस. फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस बेनिफिट क्या है, तो कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस्ड बाय 30% कंपेयर टू ऑपरेटिंग एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एज अ पार्टनरशिप कंपनी. मतलब उस केस में इसमें काफी कंप्लायंस कॉस्ट काफी डिक्रीज हो जाएगी. देन fewer filings and simplified annual compliances, that is form 8 और form 11 जो हमने annual compliances देखा. Then no requirement for board meeting और AGMs, वो administrative burdens काफी कम हो जाएगा. Then conversion to LLP जो है वो limited liability protection है, operational flexibility है, cost effective compliance है, और एक credibility banks और clients के लिए enhance करते हैं. Then important to maintain proper LLP agreement to avoid disputes. Small LLPs benefit from simplified compliances and penalties under LLP Amendment Act 2021. So मतलब in conclusion we can say that LLP एक effective structure है small firms के लिए जिसको legal recognition चाहिए बिना किसी heavy compliances या heavy investment के, और it balances risk protection, operational flexibility and cost efficiency. So रिस्क में भी प्रोटेक्शन मिलता है, आपका ऑपरेशन भी आप फ्लेक्सिबली कर सकते हो, और साथ में आपका कॉस्ट भी काफी कम रहता है. वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ LLP, जस्ट लाइक इनकॉर्पोरेशन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप क्लोजर प्रोसेस भी मतलब किस तरीके से कर रहे हो, वो जितना इम्पोर्टेंट आपका इनकॉर्पोरेशन है उतना ही आपका क्लोजर भी है. कि LLP कैन बी क्लोज्ड इन टू और 3 वेज. एक मतलब एक है आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, दूसरा आपका है कि आप कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, और द थर्ड वन इज मतलब एक कंपल्सरी वाइंडिंग अप है और कंपल्सरी का ही हम पार्ट गिन सकते हैं. द थर्ड वन दैट इज वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. So winding up refers to the process of closing the LLP, setting the liabilities, distributing assets and removing it from the register of LLPs. जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमने देखा था कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे LLP का तभी उसका बर्थ होता है. सेम वे जब आप उसका आप रजिस्ट्रार में से जब उसको रिमूव कर दोगे तो उसका वाइंडिंग अप प्रोसीजर कंप्लीट होता है. मतलब वो आप वहां जब उसको बर्थ दे रहे हो उसी तरीके से उसकी डेथ भी हो रही है. ठीक है. Then LLP continue to exist until it is formally dissolved. जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यू ही मानी जाएगी. मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप में जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप, फर्स्ट वन वॉलंटरी वाइंडिंग अप में आप जो पार्टनर्स हैं वो इनिशिएट करते हैं, और LLP सॉल्वेंट होनी चाहिए इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप में. तो पार्टनर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर द वाइंडिंग अप, अपॉइंटमेंट होगा लिक्विडेटर का टू सेटल द डेब्ट्स और डिस्ट्रीब्यूट द असेट्स, और फाइलिंग विद द ROC फॉर रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप में. मतलब म्यूचुअली डिसाइड होगा टू क्लोज द बिजनेस, और LLP के पास कोई लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, सॉल्वेंट होनी चाहिए, और बिजनेस पर्पस जो है वो इन केस
कोई बिजनेस पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो उस केस पे भी इसको वाइंड अप किया जाता है। तो सिंपल प्रोसीजर है कि आप एक रिजोल्यूशन पास करो, आपके जो लायबिलिटीज है कोई पेंडिंग है तो वो सेटिंग करो, आप अगर कोई क्रेडिटर्स हैं तो उनसे भी कंसेंट ले लेना चाहिए, साथ में जो एप्लीकेशंस हैं आरओसी के साथ फाइल करना है फॉर्म्स वो फाइल करो, और आफ्टर अप्रूवल एलएलपी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सिंपल और कॉमन मेथड हो गया डिसॉल्यूशन का, वाइंडिंग अप का। The next one is compulsory winding up. It is initiated by the tribunal or the court under the certain circumstances कि LLP unable to pay the debts, or LLP acted fraudulently or against public interest, or default in compliances for 2 consecutive years. So tribunal appoints a liquidator to carry out the closure. और ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है वाइंडिंग अप का किस केस में, तो इसमें एक सेक्शन 61 62 भी है जिसमें अगर इक्विटेबल जस्ट और इक्विटेबल रीजंस है और एलएलपी मतलब कोई इनएक्टिविटी और मिसमैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, या फिर ऑपरेशन और मिसफियंस बाय पार्टनर्स है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा फॉर द वाइंडिंग अप। सेम लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होगा टू रियलाइज असेट्स एंड टू पे द लायबिलिटीज। देन सेटलमेंट होंगे क्लेम्स, कोई क्रेडिटर्स या फिर मतलब कोई लायबिलिटीज पेंडिंग है तो वो पे होंगी उसके बाद में पार्टनर्स को। देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरप्लस का, रिमेनिंग असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर जो एलएलपी एग्रीमेंट में डिसाइड होगा उसके हिसाब से। देन आरओसी के साथ में फॉर्म फिल करना रहेगा, फॉर्म 24 टू ऑफिशियली डिसॉल्व दिस एलएलपी, और रिमूवल फ्रॉम एलएलपी रजिस्ट्रार। एलएलपी रजिस्ट्रार से जिस दिन एलएलपी का नाम रिमूव हो जाएगा तो इट सीज टू बी एग्जिस्ट लीगली। Then responsibilities of partners during winding up: to assess the liquidator in settlement of debts and asset realization, disclose all the assets, liabilities, and contracts of the LLP, cooperate to ensure smooth closures. And consequences of dissolution क्या रहता है, तो LLP cease to exist legally, partners no longer have right to LLP property क्योंकि ऑलरेडी सब डिसॉल्व हो गया, सेटलमेंट हो गया क्लेम्स का, तो उसके बाद कोई भी पार्टनर्स का कोई भी राइट एलएलपी प्रॉपर्टी पे नहीं रहेगा। एंड रिमेनिंग लायबिलिटीज इफ एनी आर सेटल्ड एज पर एग्रीमेंट और द लॉ, के एग्रीमेंट में जो डिसाइड हुआ है उस वे से वो सेटल करना रहेगा। एंड आरओसी रिमूव्स द एलएलपी फ्रॉम द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार में से रिमूवल एलएलपी का नाम रिमूव हो गया तो उस टाइम पे आफ्टर दिस डिसोल्यूशन मतलब एलएलपी लीगली एंड हुआ ऐसा माना जाएगा। सो LLP does not automatically close when business stops, ऐसा नहीं मान लेना है, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करनी है, और आफ्टर डिसोल्यूशन ही इट डज मतलब LLP लीगली एंड हुआ ऐसा माना जाएगा। Yes, future of LLP in India. If we observe this business trends in India, LLP is becoming increasingly popular, or especially among the professionals, as earlier discussed, the startups or small medium enterprises, consultants, वो सभी अभी LLP फॉर्म करने में ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसका मतलब जो फ्यूचर अगर हम इंडिया में देखें तो क्या किस तरीके से है, तो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। तो एलएलपी जो मतलब इंडिया जो है वो एज अ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो उस केस में जो मैनी फाउंडर्स हैं वो आज की तारीख में उन्हें ऐसा है कि दे वांट दिस लिमिटेड लायबिलिटी, और लॉ कंप्लायंसेस भी बहुत कम चाहते हैं, साथ में एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चाहते हैं जिससे कि उनका बिजनेस इजीली वो मूव कर सके। तो उस केस में एलएलपी वो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है उसमें प्रॉपरली फिट होती है। सो फॉर दिस सर्विस बेस्ड बिजनेसेस एलएलपी जो है वो काफी हेल्पफुल रहता है बिजनेस ये स्मॉल एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स के लिए। MCA statistics shows a speedy rise in the LLP registration year on year. Then government support and reforms. गवर्नमेंट का सपोर्ट फुल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। LLP अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में इन्होंने अमेंड किया वो यही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए।
देन माइनर ऑफेंसेस जो है, डिस्क्रिमिनेट किया माइनर ऑफेंसेस को, और एक स्मॉल एलएलपी वाला कॉन्सेप्ट भी अमेंडमेंट एक्ट में लेके आए। तो ये जो गवर्नमेंट है मतलब क्लियरली शोज दैट इट वांट्स टू promote this LLP. So this improves India's ease doing of business. Focus on ease doing of business, especially for small and medium enterprise. Then online incorporation and annual filing encourages formalization of unregistered businesses. Then benefits driving adoptions. तो लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन है फॉर द पार्टनर्स, कंप्लायंसेस कॉस्ट भी काफी कम है कंपेयर टू दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एंड टैक्सेशन पार्टनरशिप जैसा स्ट्रक्चर ही है जिसमें हमने देखा कि कोई डीडीटी एप्लीकेबल नहीं है, प्रॉफिट शेयर भी एग्जाम्प्ट है पार्टनर्स के हैंड में, और ऑपरेशनल्स काफी फ्लेक्सिबल है थ्रू दिस एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट आपने प्रॉपरली फॉर्म किया है तो कोई इश्यूज या कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होने की चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। देन सेक्टर वाइज एडॉप्शंस, तो कंसल्टिंग और आईटी सर्विसेज प्रेफर करती है, स्टार्टअप्स और जो इनोवेटिव एसएमईज है उनके लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस एलएलपी ही है, और ग्रोइंग इंटेंस इंटरेस्ट फ्रॉम दिस फैमिली रन बिजनेसेस वो भी पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह है तो उनको एलएलपी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। देन पोटेंशियल चैलेंजेस, तो लिमिटेड एक्सेस है इक्विटी फंडिंग में और वेंचर कैपिटल जो हमने लिमिटेशंस में देखा, पब्लिक लिस्टिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, लायबिलिटी प्रोटेक्शन लिमिटेड है, अगर फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट किया तो फिर कोई लिमिटेशन नहीं एप्लीकेबल होगा उस केस में, और रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलएलपी स्ट्रक्चर स्टिल इवॉल्विंग अमंग इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स। Future outlook, adoption expected to increase further due to simplified compliances and favorable tax treatment. तो वो एक बेनिफिट है, इसी वजह से जो एलएलपी है उसका क्रेज ज्यादा है। देन स्मॉल एलएलपी इज लाइकली टू फॉर्म बैकबोन ऑफ एसएमई सेक्टर्स इन इंडिया। अभी सभी स्टार्टअप और स्मॉल एलएलपी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेनिफिट्स लेने के लिए वो एलएलपी में रजिस्टर्ड होना पसंद करते हैं। देन पोटेंशियल रिफॉर्म्स में इंक्लूड easier funding options and enhanced international recognitions, and LLP may become a preferred vehicle for startup seeking operational flexibility without complex corporate compliances. कंपनी में कॉर्पोरेट कंपनी फॉर्म करना ही एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, तो उसके सामने एलएलपी काफी कम कॉस्ट में और इजीली मैनेज हो जाते हैं। LLP is a modern, flexible, and growth-oriented business structure. It offers the best balance between the risk protection, management freedom, and cost efficiencies. Future reforms and digital compliance system will make LLP more attractive for Indian businesses. So, conclusion: flexibility with protection. अगर मेरे हिसाब से मतलब एलएलपी को डिफाइन किया जाए तो मैंने इसको इसी वे में बताया कि एक फ्लेक्सिबिलिटी विद प्रोटेक्शन किस तरीके से है। तो एक ये टैगलाइन नहीं है, इट इज एक्चुअली समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एलएलपी। फ्लेक्सिबिलिटी लाइक अ पार्टनरशिप, कि एलएलपी आपको एक फ्रीडम देती है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हो, फ्रीडम है टू दिस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिसाइड करने का, कोई रिजिड बोर्ड मीटिंग नहीं है इसके अंदर, कोई भी एजीएम या उसके रिलेटेड कोई कंपल्शन नहीं है। देन इंटरनल रूल्स एलएलपी एग्रीमेंट में डिसाइड करने हैं कि आप एलएलपी एग्रीमेंट किस तरीके से फॉर्म कर रहे हो, उस वे में आपका जो एलएलपी का स्ट्रक्चर है पूरा वो क्रिएट हो रहा है, और पार्टनर्स मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स कि उनकी क्या जरूरत है। सो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी एलएलपी को मतलब प्रैक्टिकली आप किस तरीके से एक एंटरप्रीनर फ्रेंडली किस तरीके से बना सकते हो, उस वे में ये आपको हेल्पफुल करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि आप उसको अपने वे में अपनी तरह अपनी नीड के हिसाब से आप उसको क्रिएट कर सकते हो, और जो प्रोटेक्शन है वो लाइक अ कंपनी, फ्लेक्सिबिलिटी लाइक अ पार्टनरशिप, और प्रोटेक्शन आपको एक कंपनी के जैसा मिलता है कि सेम टाइम पे आपको एलएलपी जो है वो आपको एक लिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइड कर रही है,
आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो रही है, आपका जो पार्टनर्स का है वो मतलब पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम अदर्स पार्टनर का। कोई अगर कोई दूसरा पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो वो पार्टनर को उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं पार्टनरशिप में कि एक ने किया तो सभी को भुगतना पड़ रहा है, तो वो क्लॉज में उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और एक परपेचुअल सक्सेशन है कि कोई भी पार्टनर के आने जाने से इसको इफेक्ट नहीं होता है। तो दिस मीन्स के योर पर्सनल असेट्स जो है वो सेफ है इस केस में, और बिजनेस रिस्क मतलब ऑटोमेटिकली आपका पर्सनल रिस्क नहीं बन जाता, मतलब बिजनेस रिस्क डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द पर्सनल रिस्क। तो उस केस में ये बैलेंस है बिटवीन दिस फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एलएलपी एक बैलेंस क्रिएट करती है, फ्रीडम टू ऑपरेट कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो आपके बिजनेस को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या कंप्लायंसेस और कैसे जो रेगुलेशंस हैं उनको किस तरीके से फॉलो करना है। अगर पार्टनर मतलब एक ऑनेस्टली एक्ट करता है तो लॉ खुद उसको प्रोटेक्ट करता है, वो तो सिंपल है ही जो फॉर्मूला है वो। तो अगर पार्टनर ऑनेस्टली एक्ट कर रहा है तो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं पे अगर पार्टनर कुछ फ्रॉड कमिट कर रहा है तो प्रोटेक्शन अपने आप निकल जाता है। जो हमने आगे पढ़ा कि अगर रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है तो फिर कोई जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं रह जाएगी। तो यहाँ ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है अपने आप ही कि आपका एक्ट, तो अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो लॉ प्रोटेक्ट करता है, जैसे ही आप गलत काम करते हो तो आपका प्रोटेक्शन अपने आप हट जाता है। तो ये एक एथिकल बिजनेस को भी एनकरेज करती है। और एक जो मॉडर्न इंडिया अगर हम देखें कि टूडे जो इंडिया है कि भाई प्रोफेशनल को इंडिपेंडेंस चाहिए, स्टार्टअप को एक कम से कम कॉस्ट में कंप्लायंसेस चाहिए, कम कंप्लायंसेस चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो सब एलएलपी जो है वो ये सब प्रोवाइड करती है। तो जो गैप है अगर हम देखे जाए कि जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म और ये जो कॉर्पोरेट कंपनी स्ट्रक्चर है उन दोनों का जो गैप है वो उसमें ये ब्रिज का काम एलएलपी करती है। So it is not just a partnership with limited, but a modern business structure that balances flexibility in management and operation, protection of personal assets and legal compliances, or it encourages formalization of small businesses while maintaining operational freedom. So it is मतलब not just a form of business. आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि एक स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन कि जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है पार्टनरशिप की, आपका कंपनी का प्रोटेक्शन आ रहा है, और इसी वजह से एलएलपी इन माय सेंस कि भाई इट इज ट्रूली स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी विथ प्रोटेक्शन। सो this is all from my end related with this LLP, the law, the concept or the practice. So beautifully, you have covered almost everything, ma'am. I don't think anything is left out. Thank you, sir. Beautifully, everything, right? So maybe some minor doubts are there in the chats. Expected charges to the client for small scale turnover up to 2 crore. Nafiz ji. You can unmute yourself if anybody wants to unmute themselves. Just give me 1 second. Ask all to unmute. Yes. So anybody who wants to unmute yourself, please share PPT. Yes, definitely. If anyone has any more doubts which are unsolved, you can unmute yourself. मैम मेरे को ये जानना था Go ahead. कि अगर मान लीजिए मैंने 5 साल पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया है, आज हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो उसमें टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा? हाँ सर, वो तो जो मतलब नियम रहेंगे उस हिसाब से कि आपने 5 साल पहले फॉर्म किया है और आज डिसॉल्व कर रहे हो तो आज का जो रहेगा उसी हिसाब से टैक्सेबल इम्पैक्ट लगेगा ना, कि नहीं अभी मतलब आपका क्या फाइव बिजनेस। इयर्स 5 इयर्स पहले मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट कर दिया था एलएलपी में, आज मैं एलएलपी को डिसॉल्व कर रहा हूँ तो तो एलएलपी का एक्ट ही एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि जब आपने कन्वर्ट किया उस टाइम पे ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वहीं पे डिसॉल्व हो गई, वो उस टाइम पे एलएलपी क्रिएट हो चुका है आपका। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब एलएलपी को जब मैं डिसॉल्व करूंगा तो जो उसमें जो पार्टनरशिप ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस था, मान लीजिए 1 लाख रुपया कैपिटल था, तो वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और 1 लाख रिजर्व में था, वो रिजर्व ऐसे ही चल रहा था। हाँ अब आज 5 साल बाद मैं उसको डिसॉल्व कर रहा हूँ तो पार्टनर्स के हैंड में ये रुपया कैसे ट्रांसफर होगा? जो 1 लाख रुपया रिजर्व में पड़ा था वो कैसे ट्रांसफर होगा? उसका टैक्सेशन क्या होगा?
वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही ट्रांसफर होगा सर, जो मेरे तो वो हिसाब जो से। रिजर्व का पैसा जो पड़ा हुआ था उसका ऊपर कोई कोई टैक्स नहीं लगेगा पार्टनर्स के हैंड में? नहीं, क्योंकि वो पार्टनर्स, वो बाद में मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने पढ़ा कि भाई पार्टनर्स के केस में मतलब जो शेयर्स है प्रॉफिट का वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो आई डोंट थिंक कि उस पर कुछ प्रॉफिट का लगेगा। शेयर तो एग्जेम्प्ट होता है, वो तो मैं भी समझ गया, मेरे को भी मालूम है। मैं बोल रहा हूँ एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन, हम्म जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब हमने कन्वर्ट किया था, हम्म उस समय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में जो रिजर्व सरप्लस और शेयर प्रीमियम का पैसा था, हम्म वो तो एज इट इज एलएलपी में चल रहा था। अब हम वो एलएलपी को डिसॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो ये रिजर्व सरप्लस और शेयर प्रीमियम का जो पैसा था वो जब पार्टनर्स के हैंड में आएगा, इंडिविजुअल के हाथ में जब डिसॉल्व होने के बाद आएगा, तो उसके ऊपर टैक्सेशन इम्प्लीकेशन क्या आएगा? ओके, तो आप स्पेसिफिकली उस प्रॉफिट के रिलेटेड पूछ रहे हैं जो प्रॉफिट रिजर्व में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे। करेक्ट। ओके। जो ड्यूरिंग द ईयर में वो तो मेरे को भी मालूम है कि वो तो आपका टैक्स पेड प्रॉफिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कैपिटल अकाउंट में, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। हम्म। उसका सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आइडिया है, बट मैं चेक करके आपको बता दूंगी उसका क्या रहेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कि उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर। Hello, madam. Good evening. गुड इवनिंग सर। Hello. यस सर, गुड इवनिंग सर। Yes, your voice is Yeah, audible. Please say. yeah. This is Hari from Bangalore. Okay. The first point, I want one, two, three doubts actually. So you are talking about the venture capitals, right? So investor can be and they cannot get the profit share, but a हेलो। investor can invest in the business, am I right? हेलो। Hello, हाँ जी सर। ma'am. Can you hear me? यस Can you hear सर। me, ma'am? यस सर, प्लीज रिपीट द No. क्वेश्चन। What I'm asking, we are हाँ talking about the venture capitals, right? हाँ। So investors can be as a can investors can't get any equity shares and they cannot get any profit यस। sharing. Okay, but out of that investor we can invest in our business with some MOU, am I right? यस। Now, how to invite the investor? I'm asking for LLP. फॉर एलएलपी हाउ टू। How to invite the investors, like venture capitals, angel investors, like that. How to invite? Is that possible? ओके, हाउ टू इनवाइट। Yes, yes. ओके ओके, How to invite the investors? यस यस। ओके, मतलब इन्वेस्टर्स को आप किस तरीके से। ओके सर, इन दैट केस यू हैव ऑप्शंस दैट मतलब आप फर्स्ट LLP, in case of LLP, generally there are designated partners or non-designated partners. The non-designated partners maybe act as a investor partner, and they can invest through this capital contribution, and Okay. the Reserve Bank of India. Become a destination partner. Yes. So the Reserve Bank of India, if you want the foreign investment, in that case, Reserve Bank of India also, then Securities Exchange Board of India, in case of AIF or this venture capital fund के लिए आप उनको मतलब कर सकते हो। और मोस्ट मतलब वेंचर कैपिटल्स जो हैं वो इन केस ऑफ LLP, एज वी नो कि ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूशन आर देयर, और the valuation is very complex in case of this LLPs. So in that case generally मतलब जो venture capitals हैं वो इन्वेस्टमेंट इसमें आपको मतलब थ्रू दिस इन्वेस्टर्स और थ्रू दिस इन्वेस्टर पार्टनर्स उसके थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक आप एक प्रॉपर आप इन्वेस्टर डेक। So one more. Yes. Okay. So through cap investors, correct, ma'am? Yes, domestic investment structure, you can also follow that capital contribution or supplementary this LLP agreement,
देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन अपडेट कर सकते हैं आप टाइम टू टाइम जो भी है. Okay. 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 Any And more? one more thing. Yes, sir. What is the maximum designated partner and a normal partner in LLP? Sir, there is no upper limit in case of Hello? maximum partners. There is no upper limit. Sir, you Okay. got the Now answer? there is no limit in Yes. that. For minimum, there must be two. What is the minimum DP? Sorry. Voice is breaking. Yes. What's that? Your voice is breaking, sir. Last question. No, will what not I'm be asking, understood. what is the Sorry, sir. Maybe the night time now, so it'll be some disturbance. Yeah, Now, please. what is a minimum? What is a minimum designated partner and a normal partner? Normal partner can not mandatory to become a designated partner, right? Yes. Man, sir is asking that what is the normal So, minimum number of participants? minimum two designated partners, normal partner. Sir, for normal, there is a minimum at least two designated partner. It must be there. Two designated partners. Okay. Yes. Hmm. And the normal partners, any number of partners can be added in that. Yes. For हाँ upper limit में तो कोई है ही नहीं ना सर. आपको कितने भी partners minimum partner must be two. Okay. Or if you want designated Fine. partner, तो minimum designated partner must be two. और उसमें हमने देखा था कि resident designated partner Okay. at least one from this two. और maximum limit में कोई limit नहीं है. Okay. One additional, no limit maximum. Okay. Yes. Partners in loss. Okay. Okay. You said in the last 2 minutes, when is so what is the turnover limit for the auditing and what is the capital increase by how much, madam? Because if the capital increases also, the audit is mandatory you are talking about, right? So what is the threshold limit for that? Sir, your voice is breaking, Turnover so I am and not able to capital. clearly understand the question. No, what I'm asking, when is the audit required? Whether turnover or capital increased, you said, right? So what is the threshold limit for the auditing? What is the? What is the threshold limit for the auditing? Whether the turnover or capital increase, you said. Yes. Your voice is continuously breaking, sir. Yes, sir. So I am not able to understand the exact question. I don't understand. In my area, the internet problem is there. I am asking. Sir, you can send your You write in the chat, sir. yes, you can write Turnover that. or capital increase limit. What is the capital increase limit? Sir, voice is breaking continuously. Not able to Sir, I will. understand. Audit criteria is asking audit criteria. Jyoti ji, Audit? Yes, audit sir. criteria for LLP. Okay. Okay. The LLP, in case of LLP, as we discussed, na कि turnover exits rupees this 40 lakhs or capital contribution exit 25 lakhs. So if both these limits are मतलब below this limit, तो audit compulsion नहीं है. लेकिन अगर इससे ऊपर आपकी लिमिट क्रॉस होती है तो फिर ऑडिट कंपलसरी है. इवन इफ मतलब दिस टर्नओवर जो है वो आपका लेस देन 40 lakhs है, बट काफी केसेस में हम देखते हैं कि बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिट चाहिए और इन्वेस्टर्स आल्सो में इंसिस्ट फॉर द ऑडिट. तो उस केस में जो टैक्स ऑडिट वाला क्राइटेरिया है कि टैक्स ऑडिट मतलब इनकम टैक्स के पर्पज से आप देखेंगे तो अगर आपका टर्नओवर मोर देन 1 CR है और 10 करोड़ जिसमें 5% कैश एक्सपेंडिचर है,
तो आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगा। और जो नॉर्मल ऑडिट है उसमें 40 लैक्स टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लैक्स, वो 2 लिमिट है। हेलो। I think doubt is clear. If anything is there, then we will discuss. Okay. Okay. Any more doubts, anyone? जब से मेरे पति ने इसे पहनना शुरू Any more doubts? I don't think so, ma'am. Yeah, already you have covered almost everything. So we will wind up. It's almost 2 hours, ma'am. Thank you so much for perfect energy. You have maintained till the end and so beautifully explained almost all the aspects. All the aspects. So very detailed discussion it was. So anybody who wants any more doubts or anything? Yes. Thank you so Okay. much, sir. So we'll wind up, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all of Thank you so much. Okay, ma'am. Thank you so much for your you. patience, deliberations, and once again, it was really, really very detailed and complete. Slow by slow, you have covered almost every point. Yes. Thank So you. thank you so much. Thank you so much. Thank Good night, everyone. Thank you. We'll meet tomorrow. We have another session tomorrow. Okay. Good night. Good night. Good Good night. night.